Hello everyone. I welcome you all on Creative Edge YouTube channel. My name is Shubham Dubey and today we are going to discuss questions of quantitative aptitude for your design entrance exam and architecture related examination. So just quickly bring all of your friends who are going to prepare for, who are going to appear for NID, UCEED, or NATA, or any design entrance exam they are preparing for. You can bring them on our channel so that they will also benefit it for the same. Also, if you're new to this channel, do not forget to subscribe to our channel. And one more important thing I would like to tell you is that if you wish to download the study material of design related entrance examination, so you can go in the description box. So without delaying further, we are going to start our session. At the same time, I will also tell you that I am going to entertain your all the queries which you are going to ask me in this chat in this session. So if you wish to, you can ask me your doubts in the chat box, right? So चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज के सेक्शन को। तो यहाँ पर आज हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। खासतौर पर मैं उन क्वेश्चन को फोकस में लेना चाहूंगा जो हमारे NIFT में पूछे गए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको नाटा में भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको या इन पर बेस्ड क्वेश्चन सिमिलर ऐसे क्वेश्चन आपको यूसी में भी देखने को मिल सकते हैं। बट इफ यू आर स्पेशली दिस सेशन इज स्पेशली फॉर NIFT एंड नाटा पीपल एंड फॉर यूसी पीपल दिस कैन बी a brush off of their basic concepts because UC ask question of quantitative as well, but it asks more on application, राइट? तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आज आप मेजरली देखेंगे कि आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन, देन आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन ऑफ LCM HCF, उसके बाद टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, मतलब कुछ टॉप 10 क्वेश्चन है विच मैं आप लोगों के सामने आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों सभी लोग हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए। So you can see that the what is the question says that in this part the ratio of average temperature between Jaipur and Delhi is 9 is to 7 and between Jaipur and Mumbai is 11 is to 8. So हमको यहाँ पर दो रेशियो दिए गए हैं बच्चों। फर्स्ट इज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली। तो जयपुर और दिल्ली के लिए जो टेम्परेचर गिवन है दैट इज 9 is to 7 and between Jaipur and Mumbai is 11 is to 8. जयपुर और मुंबई के लिए it is 11 is to 8. We have to find out the average temperature between Delhi and Mumbai. इन दोनों के बीच में टेम्परेचर निकालना है। Now, in order to solve such type of question, you have two methods. I'm going to tell you both of the method. One of the method probably you know. Second method may be new to them. So first of all, the method basically there are there is a simple concept that is known as scaling, जिसका मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्केलिंग का मतलब क्या होता है? When it comes to scaling, basically whatever is common in the ratio, we will try to make them equal. What do I mean by that? Some of you may have understood that, or for some it may be new. So you can see that Jaipur and Jaipur, in both the ratio you have Jaipur, that is on the ratio scale you have temperature of Jaipur. So what I'm going to do is that let us try to make temperature of Jaipur to be equal on ratio scale in both the ratios. I have here 9 is to 7, I have here 11 is to 8. तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो 11 है ना, ये जो 11 है इसका मल्टीप्लाई मैं इस पूरे से कर दूंगा। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 11 हियर, इट इज गोइंग टू बिकम 11 into 9 is 99, 11 into 7 77, और जो 9 यहाँ पर दिख रहा है तो 9 का मल्टीप्लाई मैं सेकेंड रेशियो में कर दूंगा। इट इज गोइंग टू बिकम 9 into 11 99, 9 into 8 80, 72. So you can see that in both the ratios the value of Jaipur is become 99. अब यहाँ पर आप जो दो सिटी है, इनफैक्ट इट वाज दिल्ली, एच की जगह मुझे दिल्ली डी लिखना चाहिए। सो दिल्ली और मुंबई का जो रेशियो है इट इज बेसिकली 77 is to 72. You can see that Delhi is 77 and Mumbai is 72. This is what the question was asking. So the answer to this question is option number 2. This is one of the methods for solving question. Now when it comes to
व्हेन इट कम्स टू अनदर मेथड, तो आप एक मेथड और देख सकते हैं। यहाँ पर भी आइडिया काफी हद तक वैसे ही रहेगा जो मैंने मेथड वन में किया, बट दिस इज जस्ट अनदर अप्रोच। तो यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं जयपुर है आपके पास, देन सिंस जयपुर इज कॉमन, दैट इज आई एम कीपिंग जयपुर हियर, एंड beside Jaipur, I'm going to write Mumbai and Delhi, or Delhi and Mumbai. It is your choice which you wish to write at first place. So जयपुर और मुंबई का अगर आप रेशियो देखेंगे, तो जयपुर और मुंबई का रेशियो, जयपुर एंड मुंबई इज 11:8, यानी कि जयपुर की जगह पर मैं 11 लिखूंगा, मुंबई के स्थान पर आई विल बी राइटिंग 8। देन आई हैव जयपुर एंड दिल्ली एज वेल, तो जयपुर एंड दिल्ली का रेशियो इज 9:7, तो जयपुर के लिए 9 और दिल्ली के लिए 7। नाउ यू कैन सी दैट when you do from this method, you can see that you have some blank spaces here. You have some blank spaces here. So what you are going to do is that this blank space has to be filled with that number which is just adjacent to it. क्या बोल रहा हूं मैं? इस ब्लैंक स्पेस के साइड में आप उसी नंबर को लिखेंगे जो जस्ट इस 11 के साइड में है। ठीक है, जो इस ब्लैंक स्पेस के साइड में है, मैं करेक्ट करूंगा खुद को। तो यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस के साइड में कौन है? 11 है, तो यू विल बी राइटिंग 11 ईयर। इस ब्लैंक स्पेस के साइड में कौन है? 9 है, सो आई विल बी राइटिंग 9 ईयर। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 8 into 9 is going to be 72, 11 into 9 is going to be 99, 11 into 7 is going to be 77। सो आपके पास इन तीनों शहर का टेम्परेचर्स का रेशियो आ गया है। व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। सो दिल्ली इज 77, मुंबई इज 72, so 77 is to 72 यहाँ से भी आपको मिलेगा। I hope the question must be clear to all the online people. If you have any doubt, you can ask me in the chat box. ठीक है? So let us move to the next question, all the online people. Let us move ahead. क्या बोला गया? The ratio of three numbers is 3:4:7. Again, this is another question of another question of ratio and proportion. So the ratio of three numbers is 3:4:7. और इसका प्रोडक्ट जो है वो ये है 18144। We have to find out those numbers. So first of all, let us assume that these three numbers are 3x, 4x and 7x। ठीक है, ये हमें तीन नंबर्स दिए गए। द रेशियो ऑफ दीज नंबर आर 3x, 4x एंड 7x। इनका प्रोडक्ट हमको बोला गया, दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ 3x, 4x एंड 7x। तो हम यहाँ पर 3x इंटू 4x इंटू 7x लिखेंगे, एंड इट हैज बीन मेंशन्ड एज 18144। First of all, I will be bringing 3 times of x, which is the product. So x cube मैं यहाँ पर बाहर ले आऊंगा। It is not 3 times of x, it should be x cube. x into x into x is x cube. और आपके पास है 3 into 4 into 7, so you can cancel it. This 3 is going to go in the denominator in the right hand side, so it will become cancelled with 18144. So 3 6 are 18, then 1 4, so 3 4s are 12, then I have 3 8s are 24। आई होप ये आइडिया सबको क्लियर होगा। आई एम जस्ट सिंपली कैंसिलिंग इट। ठीक है, आप चाहो तो साइड में भी कर सकते हो if you wish to। देन आई हैव कैंसल्ड 3 with 18144। देन लेट अस कंपेयर, कैंसिल with 4, so 50 1 5 1 and 4 2s are 8। ठीक है, तो यहाँ पर it is 1 5 1 2। Now let us cancel it by 7। How do I know it is going to be cancelled out by 7? Basically, I'm just giving it a try. And in most of the cases, you will see that the number is simply cancelled out. ठीक है, so 7 को आप cancel करेंगे 1 5 1 2 से, so 7 2s are 14, 1 1, 7 1s are 7, 4 2, 7 6 are 42। So you can see that x cube is equal to 216। x cube की वैल्यू कितनी है बच्चों? 216। ठीक है, so this is what x cube equal to. So x is going to be cube root of 216, which is 6. So x की value 6 है। Now we have to find out the value of three numbers which are 3x, 4x and 7x. So 3x is going to be 3 into 6, that is 18. 4x is going to be 4 into 6, that is 24. And 7x is going to be 7 into 6, that is 42। तो यानी कि यहाँ पर ये जो नंबर है 18, 24 एंड 42 इज एब्सोल्युटली राइट। आई होप दिस क्वेश्चन मस्ट बी इजी फॉर यू। आप देख रहे होंगे कि
when it comes to NIFT, it asks very simple question of quantitative aptitude. So this is a good news for all the people who are preparing for NIFT, that if you think that aptitude is something you fear of, so in that case, you should not be worrying that much you usually do. Yes, there is need to be concerned about your aptitude portion, but you should not be worrying about that. बहुत easy question है, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे. If you pick the previous year question paper, you will see that बहुत difficult question नहीं आए हैं. So I hope this must be clear to all the people. ठीक है? Now let us move to the next question. This is the next question, and this question is based on the concept of discount. The question reads that what is the single discount that is equivalent to the two successive discount of 12% and 20%? Some of you must have understood the question. They would have started doing it. In fact, they know the formula and they will simply write down the answer in a minute or two, right? But for those who are new to this, so let me tell you from the basic. क्या बोला गया? What is the single discount that is equivalent of two successive discount of 12%, 20%. That means what the question is saying that let us say on the first day you offer a discount of 20% and on the second day you offer a discount of further 12%. Now some of you may ask, will it going to be equal to the discount of 32%? That is 12 plus 20? Obviously not. Why is it so? First of all, you're offering a discount of 20% on the price which is written on the your product. For example, let us say the mark price of your product is going to be 100 rupees. I'm simply assuming that you can assume any number, but I firmly believe that 100 makes your calculation easy. So let us say the mark price of the product is 20 rupees. So of discount of 20%. First, you may also be thinking, if I'm not considering 12% first, so the order does not matter. तो आप एक काम करिए कि आप यहाँ पर 20% निकाल लीजिए किसका, इस 100 का. तो 100 का 20% तो आप सब जानते हैं ना, वो तो 20 ही होगा. 20% कैसे निकालेंगे? 20% इज 20 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ 100. तो 100 एंड 100 इज गोइंग टू बी 20. दैट मीन्स द डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज. दैट मीन्स आपको जो नया प्राइस मिला है वो है 80 रुपीज. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल द पीपल. ठीक है? तो आपको 80 रुपीज का आपको यहाँ पर 20 रुपीज के डिस्काउंट के बाद योर सेलिंग प्राइस बिकम्स 80. सो लेट अस से the first day the shopkeeper was selling your product at 80 rupees. Now on the next day he further offers a discount of 12%. That means he offers a discount of 12% on the price which was on the first day, that is 80 rupees. Now he will not be offering a discount of 12% on 100 rupees. No, absolutely. This time the base of your question has been changed. So you will be finding out the 12% of 80. आप लोग यहाँ पर 12% ऑफ 80 निकालेंगे. सो वो कैसे निकालेंगे? 12 by 100 into 80. Simply 0 and 0 are cancelled. ठीक है? 2 5s are 2 4s are. So 12 into 4 is going to be 48. Upon 5, it is equal to 9.6. That means a further discount of 9.6 rupees. That means your price was 80, then you reduced it by 9.6, then it becomes 70.4. This is the new price after the 12% discount. So what has the question been asking? The single discount that is equivalent to the discount of 12% and 20%. So instead of the question is asking, instead of offering two different discount, I wish to give only one discount and that is equivalent to two different discount. That means what I wish to do is that you were given the mark price of 100 rupees. You were given the mark price of 100 rupees. Now you are going to sell it at 70.4 rupees. You're going to sell it at 70.4 rupees. That is the single discount you are giving instead of two different discounts. I hope the idea is clear to all the online people as well. ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर 100 में से 70.4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. दैट इज 10 में से 4 गया is 6, then 9, then 9 by 7, 29.6. So 29.6% discount I should be offering in this case. कौन सा वाला ऑप्शन है? ठीक है? So 29.6. Two options are very close. So make sure you are very careful when you mark this.
तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। 3/5 का मतलब क्या होता है बच्चों? 3/5 का मतलब है 0.6। ठीक है, दैट इज वाई आई एम राइटिंग ऑप्शन डी टू बी द करेक्ट आंसर। नाउ देर इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। दिस इज समथिंग for the sake of understanding. I have told you this method is also correct. You can apply this method in actual examination as well, but there is another formula for the case of discount. So let me bring you to the question once again. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली फाइंड आउट द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट, effective discount percentage. I'm simply using the abbreviation. So effective discount percent is going to be D1 plus D2 minus D1 D2 अपॉन 100। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, वेयर D1 एंड D2 आर द परसेंटेजेस ऑफ डिस्काउंट mentioned in the question. So it is 12 plus 20 minus 12 into 20 upon 100, that is 32 minus, this is 32 minus, now 21s are 25s are, so 12 upon 4 is 2.4, it is going to be 29.6. So this is the direct method of finding out this solution to this question. आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। Now the question reads that a shopkeeper buys a mobile phone for rupees 12500 and sells it 13350. What is the profit percent? Now you can see that how easy this question is. Simply you should know the value of formula for profit percent and you will be able to answer this question. This can be done within a minute, right? तो आप देख सकते हैं बहुत ही easy question है. So cost price has been given to you. This is the cost price in this question and sells it for 13350. That means this is the selling price. You can see that the selling price is greater than the cost price. Obviously, profit has been made. So what is the value of profit that has been made? It is basically selling price minus cost price. That is 13350 minus 12500. So let us subtract it. ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइड में सब्ट्रैक्ट यहीं पर कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ। 0 minus 0 is going to be 0. Then 5 minus 0 is going to be 5. Then 3, and this is 5. So 13 minus 5 is 8. Then this is going to be 2. 2 minus 2 is going to be 0. 1 minus 1 is going to be 0. So profit of 850 rupees has been made in this question. ठीक है, 850 रुपीज का आपका प्रॉफिट है। अब आपको तो लेकिन प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सो प्रॉफिट परसेंट इज गोइंग टू बी whatever is the profit divided by cost price into 100. So profit is 850 upon cost price, which was 12500 into 100. So when I cancel it, double zeros and double zero are cancelled. Let us cancel it by 5. So 5 25 time 5 set is going to 5 ones are 5 sevens are 0. Then 5 fives are, and then 5 34 times. So it is going to be 34 upon 5, which is equal to 6.8% profit you are going to give on this question. राइट, तो आप लोगों को कितना प्रॉफिट आया बच्चों इस क्वेश्चन में? 6.8%. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सिंपल फॉर यू. ठीक है, आई एम ऑल्सो एंटरटेनिंग योर चैट इन द चैट बॉक्स, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कम एंड चैट इन द चैट बॉक्स. राइट, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ स्पीड टाइम डिस्टेंस. व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, हाउ मेनी मिनट्स विल अ मोटर कार ट्रैवलिंग at 45 kilometer per hour to cover a distance of 15 kilometer. That means this question is from, as you can see that it is from speed time distance. The question is asking how many minutes. That means the question is asking something related to time. Will a motor car traveling at 45 kilometer per hour? That means you can simply see that this is nothing but the speed of the car. It is running at 45 kilometer per hour and it wished to cover a distance of 15 kilometer. That means the distance has also been mentioned to you. So simply if I wish to find out the time, so time is going to be distance upon speed. आई होप ये आइडिया, ये फॉर्मूला सबको पता होगा. सो डिस्टेंस इज बेसिकली 15 किलोमीटर अपॉन स्पीड. स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर विच इज, आप यहाँ देख सकते हैं 15 ones are 15 threes are. सो यू कैन सी दैट 1/3. और यहाँ पर सवाल आता है कि यूनिट क्या रहेगी.
You can see that your unit was किलोमीटर पर आवर, your unit was किलोमीटर. ठीक है, तो आपका जो एक, इसको अगर मैं टेक्निकली आपको समझाऊं तो किस तरह से वर्क करता है बच्चों, ये डिस्टेंस इज बेसिकली 15 किलोमीटर अपॉन स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर. पर आवर मीन्स आप ऐसा समझ लीजिए इट इज डिवाइडेड बाय 1 आवर. ठीक है, 1/3 अपना आंसर आ गया. नाउ आई एम टेलिंग यू द हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट. ठीक है, तो आप क्या करते हो, किलोमीटर से किलोमीटर को कैंसिल कर देते हो और ये जो आर है ये सबसे ऊपर आ जाता है, तो आपके पास यूनिट में आपके पास आर बचेगा. ठीक है, और 15 और 45 का तो हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं. 1/3 आर. नाउ 1/3 आर मीन्स 1/3 आर मीन्स 60 minutes. So 3 and 60 are cancelled by 20. So 20 minutes is the right answer to this question जो कि हमें यहाँ पूछा भी गया था. So we have to find out our time in minutes. So that is why 20 is absolutely right. I hope सबको clear हुआ होगा ये. चलिए. Now let us look at this question again. The question is related to speed, time, distance. If the speed of 100-meter long train is 144 kilometer per hour, you can see that your speed is in kilometer per hour, but the distance, the length of the train that question is mentioning is in meter. So you should be very careful when while dealing with this question. The question is not tough. The question is very easy. The only thing is that be careful when it comes to unit. So distance is in meter, speed is in kilometer per hour, and the option mentioned is in second. Now, obviously, now you know what to do next. You should, what you will be going to do, you will be simply converting this kilometer per hour in meter per second. So it is going to be 144, which is kilometer, 144 kilometer per hour. Now, I will tell you one thing that many of you may know, or I will say that many of you already know, that when it comes to 1 kilometer per hour, and now if I wish to convert this unit in meter per second, so I simply write it as 5/18 meter per second. So now 144 into 5/18 meter per second. So 18 and 144 cancel 8 times. 8 into 5 is 40. 40 meter per second. Now many of you may be thinking why, how I'm doing this calculation so quickly just because I'm a faculty. Is it the right way of thinking? Or absolutely not. You can also do it. How? I will tell you that you should know tables from 1 to 20 when solving for going for aptitude section. Okay? It is not like that without learning table from 1 to 20 you will not be able to solve it. You will be able to, obviously, but it is going to take some time when you solve it. So the table are not for the sake of checking your IQ, but for the sake of understanding that in order to complete your paper on time, in order to complete your paper quickly, you should be doing, you should be learning tables, right? So hello Melody World. Hi. I hope this message finds you well, and I would suggest to stay on this channel so that if you're preparing for any design related exam, you can prepare from this channel. Now, अब यहाँ पर हमें आपकी जो स्पीड मिल गई है वो है 40 मीटर पर सेकेंड. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम विल इट दिस ट्रेन क्रॉस अ स्टैंडिंग पोल. कितने टाइम में ऐसा होगा. सो दिस इज, लेट अस से दिस इज योर ट्रेन and this is the pole which is standing. Now, obviously, in order to cover this pole, the train has to travel as much distance as the length of the train itself. So you have been told that 100-meter is the length of train. So I hope everyone is able to understand that when the train will travel 100 meters, it is going to cross this pole. It is going to cross this pole, and and that is going to be the distance that you should write. So I hope सबको समझ में आएगा. So I am calling the length of the train and the distance traveled by the train to be 100 meter. ठीक है, तो किसी थिन ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने के लिए आपकी ट्रेन को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है वो उसकी लेंथ के इक्वल होता है. बट अगर कोई थिक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए दिस इज अ प्लेटफॉर्म, now your train wish to cross this platform, so how much distance does your train need to travel? The length of the platform plus the length of the train itself. तो उस केस में I can say that my train is going to cross the platform. I hope आइडिया सबको क्लियर हुआ होगा. सो यहाँ पर आपका जो
आपको यहाँ पर निकालना क्या है, टाइम निकालना है बच्चों। तो टाइम इज अगेन सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ डिस्टेंस इज 100 मीटर, स्पीड इज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर आप इसको क्रॉस कैंसिल कर देंगे, जीरो एंड जीरो आर कैंसिल, टू टूज आर टू, फाइव्स आर 5/2, विच इज नथिंग बट 2.5 सेकेंड योर ट्रेन इज गोइंग टू टेक। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भी आप समझ पाएंगे कि मैं अपने टाइम को सेकंड में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मीटर पर सेकंड आपकी यूनिट थी स्पीड की। ठीक है, चलिए। Now, again, a simple question of LCM. What the question is asking, how many zeros are there in the LCM of 150, 70, and 2500? ठीक है, तो simply you need to find out the LCM of these three numbers and do let me know how many zeros you are finding. बहुत easy question है, let me tell you how you can simply calculate it. आप यहाँ पर देखो, एक तरीका तो ये कि या तो आप पूरे 15, 7 और 2500, 150, 70 एंड 2500 का पूरे का एलसीएम लीजिए। One way is that. Second way is that you simply take the LCM of 15, 7 and 25. Now some of you may be thinking कि हमें तो number of zeros के बारे में पूछा गया है. How shall I do that? तो पहले तो आप LCM निकालिए। पहले तो आप LCM निकालिए। तो LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप 15, 7 और 25 का LCM निकालिए। डू नॉट कंसिडर जीरोस एज ऑफ नाउ, कीप देम इन होल्ड। ठीक है, I'm just trying to simplify your problem to the extent where you will not be taking a lot of time when solving this. तो हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं। 5 times 7 is going to be as it is, 25 is going to be as it is. Now let us divide by 5. 1, 7, 5, 5, say 1, 7, 1, 7 say I'm going to write down 1, 1, 1. So you can see that 3 into 5 into 7. ठीक है, so it is going to be 3 into 5 into 5 into 7. Now, if you wish to multiply, you can do that. If you don't wish to, no need to do it. Now, the question was asking how many zeros are there? I have still not solved that problem. You may be thinking कि मैंने तो आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया सर, जीरो कहाँ गए? अरे जीरो यहीं पर कहीं होंगे, यहीं पर कहीं होंगे से मतलब डबल जीरो हो सकता है, सिंगल जीरो हो सकता है, या ट्रिपल, कितने भी जीरो हो सकता है। आई डू नॉट नो हाउ मेनी जीरोस आर देयर। तो कैसे चेक करोगे हाउ मेनी जीरोस आर देयर? तो लेट अस अज्यूम बाय वन थिंग, लेट अस से आई हैव वन जीरो, दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लीकेशन है, या यू कह लीजिए एक जीरो लगा हुआ है। तो एक जीरो अगर लगा हुआ है तो क्या ये 150 से डिविजिबल है क्या? व्हेन आई से एलसीएम, दैट मीन्स दिस 150 मस्ट डिवाइड दिस नंबर, द प्रोडक्ट। तो 150 से डिविजिबल है, हाउ कैन आई चेक दैट? तो मैं यहाँ पर 150 से डिवाइड करके देख लूंगा। इफ आई गेट एन इंटीग्रल वैल्यू, आई विल से दैट कि ये पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि एक जीरो तो कम से कम है यहाँ पर। आई वुड से एटलीस्ट वन जीरो इज दैट मीन जीरो एंड जीरो आर कैंसल, 3 into 5 15 are cancelled. You can see that 5 into 7 you are left with, that means at least one zero is there. At least one zero is there. That means you have checked for 150, you do not need to check for 70, because 70 is also going to be cancelled out. You can see that. Okay, but is it going to be, is it possible that 2500 is also dividing the product? तो let us cross check this. तो मैं यहाँ पर क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो है 3 into 5 into 5 into 7 लिखा हुआ था। मैं एक ही जीरो अज्यूम कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि दिस 2500 इज ऑल्सो गोइंग टू डिवाइड दिस प्रोडक्ट। ओनली देन आई विल बी कॉलिंग दिस प्रोडक्ट टू बी द एलसीएम ऑफ 150, 70 एंड 2500। आइडिया सबको क्लियर हो रहा है? सो 2500 से अगर आप डिवाइड करोगे तो यू कैन सी दैट जीरो एंड जीरो आर कैंसल, बट यू वन जीरो आर लेफ्ट विद 25 and 25 is going to be cancelled out, but still you are going to be left with 10. That means this zero is never going to be cancelled out if you have only one zero in this product. So my assumption was wrong. That means the LCM आपका जो भी आएगा तो it is going to be 3 into 5 into 5 into 7, and there should be two zeros appended. That means it should be double zero, so that it is going to cancel double zero here. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बहुत जल्दी बता सकता शॉर्टकट से कि यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर एक जीरो है और यहाँ पर दो जीरो है, तो जो हाईएस्ट है वही उसका आंसर है। बट अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए ना, दैट्स व्हाई वी वेंट थ्रू दिस वे। तो यानी कि यहाँ पर वी यू आर गोइंग टू हैव
two zeros in the LCM of this because 150 को ये कैंसिल कर देगा, 70 का भी एक जीरो कैंसिल लेके चला जाएगा, 250 2500 के भी दो जीरो ही लेके चला जाएगा. I hope the idea is clear. So that is why I'm saying that two zeros are there in the LCM of this these numbers. ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों. We have to find out the HCF of this, and this equal to 10 plus something. Now this something I need to find out. So first of all, I will finding out the HCF of 80. तो 80 का HCF कितना होगा? सिंपल तरीके से निकालेंगे. So 2 टाइम से कैंसिल करेंगे 40, 2 से it is going to be 20, 2 से it is going to be 10, 2 से it is going to be 5 और 5 से it is going to be 1. So 80 can be written as, मैं साइड में लिख लेता हूँ, 2 into 2 into 2 into 2 into 5. Then when it comes to 120, so 2 से डिवाइड करा 60, 2 से डिवाइड करा I have 30, 2 से डिवाइड करा I have 15, and 3 से then I will divide, it is going to be 3 into 5. So 2, 2, 2. So 120 can be written as, and थोड़ा सा मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों, so that आपको भी समझने में आसानी होगी. So 80 has been written as 2, 2, 2, 2 into 5. Then 120 has been written as 2, 2, 2, 3 and 5. और आखिरी में I have 200, 2 से 100 टाइम, 2 से 50 टाइम, 2 से 25 टाइम, 5 से 5 टाइम, and 5 से again 1 time. So again it is going to be 200 is 2 into 2 into 2 into 5 into 5. तो आप देखेंगे HCF क्या आ रहा है. I have 2 once, I have 2 once again, I have 2 once again. तो यानी कि आपको कॉमन क्या मिला इन तीनों से? 2 into 2 into 2. Is it the only common term? Absolutely not. We have 5 as well. That is 40. 2 into 2 into 2 is into 5 is going to be 40. तो 40 आपका यहाँ पर क्या है बच्चों? HCF है in this question. So 40 can be written as 10 plus something. तो ये आपका 40 के इक्वल है. So basically, if I value find out the value of this question mark, that is x, x is going to be 40 minus 10, that is 30. तो देखिए कितना easy question NIFT ने पूछा था. So 30 is the right answer to this question. ठीक है, चलिए देख लेते हैं और भी अगला क्वेश्चन, और भी कोई क्वेश्चन है क्या हमारे पास? So this is going to be one of the questions. So क्या बोला गया है? We have to find out the greatest number of 4 digit which is exactly divisible by this, this and this. Now for solving such type of question, there are basic methods, then there are the shortcut method. ठीक है, मैं basic बता देता हूँ पहले, then I will be telling you the shortcut to this method if you are given the options. But if you are not given the options, you must be thinking how, when, in which case I will not be given the option. So for UC people, you are asked NET type of question as well. So आपको वहां पर ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं शुरुआत के जो 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं वहां पर. बट फॉर NIFT डोंट वरी, यू विल बी गिवन ऑप्शंस. तो क्या बोला गया है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 45. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इनका क्या निकालेंगे, LCM या HCF, ये सोचना होगा हमको. So find the greatest number of 4 digit which is exactly divisible by these numbers. So that means these 18, 24 and 45 are going to divide that particular number. That means you will need to find out the LCM of these numbers. ठीक है, तो आप LCM निकालेंगे 18, 24 and 45. That means the LCM of this number, whichever number is going to be, it is going to be divided by, it can be divided by 18, 24 and 45. So 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 12 टाइम, 45 एज इट इज. अगेन 2 से हम करेंगे, सो 9 एज इट इज, 6, 45. देन 2 से करेंगे हम, सो आई एम गोइंग टू हैव
9 as it is, 3 and then 45. अब 3 से करते हैं बच्चों, so 3 टाइम, 1 टाइम, 15 टाइम, 3 से करते हैं 1 टाइम, 1 टाइम, 5 टाइम, 5 से करते हैं 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम. So I'm going to get 2 into 2 4 into 2 8 into 3 24 into 3 72 into 5 360. So 360 is the LCM of these numbers. That means 360 is the number which can be divided by 18, 24 and 45. ठीक है? But this is a 3-digit number. We wish to find out the greatest number of 4-digit. The greatest number of 4-digit. Now, what is the greatest number of 4-digit? It is 9999. But obviously 9999 is not the number that we want. Why is it so? Because 9999 is not going to be divided by 18. It must leave some remainder. Same in the case of 24, same in the case of 45. That means it is somewhat lesser than 9999. How I am going to find that out? तो यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका ये है, let us divide this number by 360. ठीक है? और if you don't wish to divide, if you don't wish to divide, you can think of some number. That means 360 must be multiplied by with some number so that you reach near to 9999. I'm not saying you will going to bring exactly 9999. Obviously, you can't bring it. You are going to multiply with some number which leaves you close to 9999. That's why I'm saying that कि आप यहाँ पर 360 से डिवाइड करोगे. इस बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे? आप 360 से डिवाइड करोगे. ठीक है, तो 9 से कैंसिल करते हैं 40 टाइम, 9 से कैंसिल करते हैं 1 1 1 1. अब 4 से डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, जीरो को साइड में रखते हैं अभी. सो 4 2s आर 3 1, 4 7s आर 3 1, 4 7s आर. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 277 आ रहा है और एक जीरो भी था हमारे पास नीचे डिवाइड में, एक जीरो भी था डिवाइड में, तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 27.7 आ रहा है. या यू कह लीजिए 27 से मेरा मतलब, इफ आई मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 27, if I multiply this number with 27, I may probably get that value. क्या ये आइडिया सभी को समझ में आ रहा है क्या? All the online people, why I am going to write this 27 in place of this number. It could be either 27 or 28. Most probably it is going to be 27. ठीक है, 27 के आसपास ही कोई नंबर होगा. So 360 into 27 हमें यहाँ पर करने की जरूरत पड़ेगी, if I'm not wrong. ठीक है, या फिर थोड़ा सा और सोचने की पहले मैं तो ये देखता हूँ मैंने ये कैलकुलेशन सही आई होप किया होगा. ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों. सो 9999 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट ऑफ 4 नंबर. सो 9 से 409 से आया 1111, देन आई मस्ट बी. ठीक है, थोड़ा सा मैं देखता हूँ इसको. 4 2s आर 4 2s आर 8. ठीक है, सो 4 2s आर 8, देन आई हैव 3 1, 4 7s आर. ठीक है, so 3 1 4 7 आर 27. हाँ, आई बिलीव 27 इज राइट. तो अब देख लेते हैं कि कितना आता है मल्टीप्लाई करने पर. तो 36 इंटू 27 हम लोग कर लेते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट आई कैन डू, सिंपली मल्टीप्लिकेशन. नाउ लेट मी टेल यू द शॉर्टकट टू मल्टीप्लिकेशन एज वेल. तो मैं क्विकली यहाँ पर कर लेता हूँ बच्चों. 36 इंटू 27. So I'm telling you one shortcut method. If you're able to understand it, well and good. Otherwise, we can learn it at some later time. But as of now, the time is crucial. That's why मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ. समझिएगा सभी लोग मैं क्या कर रहा हूँ. मैं यहाँ पर इन दो का मल्टीप्लाई करूंगा पहले. 6 इंटू 7 इज 42 का 2 कैरी 4. फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा. 3 इंटू 7 21, 6 इंटू 2 12. तो यानी कि ये हो जाता है 33 प्लस 4 37 का 7 कैरी इज 3. Then I'm going to multiply 3 into 2 6 plus 3 9. So 9 7. I can see that 972 और एक जीरो जो मैंने छोड़कर रखा था 9720. So this is the correct option to this question. But some of you may be thinking कि ये तो बहुत लेंदी जा रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है. So what you can do is that
pick the options. Now the question arises. Now you are still in picking the option as well. You can save your time. Kaise? Let us try to pick the right option. How I will know that? The question is asking about the greatest number of four digit. First of all, look at all the option. Now tell me which is the greatest number. Which is the greatest number? You can see that this is 9580, 9640, 9720, 9860. You can see that option fourth is the greatest amongst all. Now what I'm going to do, let us try to divide this 9860 with 18. Now the question arises, is it going to be completely divisible by 18? So even without dividing, you can say that yes, it is going to be. How? You can see that if you you can see that for dividing any number with 18, you should know the divisibility rule of 18. And what is that? It is simply that it should be an even number. So yes, it is an even number because 18 is also an even number. So even number can divide even number. So 18 is an even number. Your numerator is also an even number. 9860 is an even number. Second, 18 is a multiple of 9. That means this 9860 should also be the multiple of 9. Is it multiple of 9? Let us cross check. How can I add all the digit in 9860? So 9 plus 8 plus 6, that is 9 plus 8 is 17, plus 6, 23. What I have done, I have added all the digit of 9860, 9 plus 8 plus 6, that is 23. You can see that 23 is not a multiple of 9. 9 twos are 18, 9 threes are 27. 23 is not. That means 18 is not going to be divided by this number. That's why you can immediately discard this option. Now you don't even need to check for 24 and 45, even though if they are. However, they are not divisible. But even if they are, you should not be worrying about that. तो पहला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया. ठीक है, या यू सबसे पहले आपने इसको डिस्कार्ड कर. Now let us move to this option. You will find that 18 is going to be divided with this number, 24 is going to be divided with this number, 45 is also going to be divided with this number, and you will immediately mark that correct. मतलब cancellation ही करनी है. ठीक है. So this is how you must understand. So just design, you're asking what is an ideal rank for UCEED examination. So people, if you wish to go into IITs, you must come in top 20 or top 50 colleges in India, right? For IIT Bombay, it must be top 10 or top 20. For IIT Guwahati, it may be range from top 50. It all depends on the number of aspirants that are writing for that exam. There is no standard criteria, but we are just observing the previous year trends. So I would say that if you're in top 50, you must be getting IIT Guwahati. If you're so that is what it matters कि IIT में जाने के लिए आपको एक बहुत अच्छी रैंक चाहिए होती है. ठीक है? I hope the idea must be clear to you. चलिए. So let us see if I have any other question left for the day. So this is the last question for the day, and I'm going to simply quickly solve it. So Satish can do a job in 15 days, and Kapil works twice as fast as Satish. So you can see that Satish is doing some job in 15 days. I've been told that Kapil works twice fast as Satish. So when I say if Kapil is faster than Satish, so shall I say Kapil is going to take half the time as compared to Satish? Let me tell you once again. Satish is taking 15 days. Kapil is twice as fast as Satish. So shall I say Kapil is going to take half the time? यानी कि अगर ये 15 दिन ले रहा है तो Kapil is going to take 7.5 days because Kapil is faster. Kapil is faster. आपको समझ में आ रहा है क्या ये आइडिया? ठीक है. Then how many days can Satish and Kapil together complete the job? तो दोनों को साथ में अगर काम कराना तो वो कितने दिन में करेंगे? So how we are going to simply solve that? Now you may know one or two method for solving such type of question. ठीक है. पहले मैं आपकी मेथड बताता हूँ जो आप लोगों ने स्कूल में सीखी होगी. सो इफ यू विश टू फाइंड आउट द टाइम तो आप यहाँ पर क्या करते हो, और मैं फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा. द मेथड दैट वी जनरली यूज व्हेन वी डील विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम. आप लोग यहाँ पर क्या करते होगे, 1/15 करते होगे, 1/7.5 करते होगे, इसको सॉल्व करते होगे तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस डेसिमल हटा के 0 लगाया, 5 2s are 5 15s are, तो ये 2/15.
यानी कि ये हो जाएगा 3/15, यानी कि 1/5। आप लोगों ने बचपन में ऐसा कुछ किया होगा, और आप फिर इस 1/5 का रेसिप्रोकल कर देते हो, तो 5 days आप बोलने लगते हो। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस, जो आपने स्कूल में बचपन से सीखा हुआ। अनदर वे, द शॉर्टकट वन, ठीक है, या यू के जो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जनरली यूज करते हैं। वाई वी डू नॉट यूज दिस मेथड? बिकॉज टू मच ऑफ रेसिप्रोकल्स आर इन्वॉल्व इन इट, टू मच टाइम कंज्यूमिंग इट इज, दैट इज वाई हम यहाँ पर इंटीग्रल के साथ डील करना चाहते हैं rather than the reciprocals. सो अज्यूम कीजिए कि टाइम आपका है 15 और 7.5 डेज। 7.5 को आप क्या लिख सकते हो? 7.5 को भी आप 15/2 लिख सकते हो ना। ठीक है, तो पहले बंदे के पास टाइम, जो सतीश है, उसके पास टाइम कितना है? 15 डेज है। कपिल है, उसके पास टाइम कितना है? 15/2 डेज है। आप यहाँ पर क्या करोगे? आप दोनों का जो न्यूमरेटर है, इसका एलसीएम ले लो। क्यों ले रहे हो सर? बताता हूं। सो 15 का एलसीएम ले लो। 15 और 15 का एलसीएम 15 ही आएगा। सर ये डिवाइड बाय 2 कहाँ गया? सब्र करिए, इस 2 को कुछ नहीं किया, ये ऐसे का ऐसे ही यहाँ पर रखा हुआ है। हमें तो सिर्फ न्यूमरेटर से मतलब है। तो आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि टाइम आपका 15 है सतीश का, कपिल का टाइम इज 15/2। आपने जो एलसीएम निकाला सर, ये क्या है? बेसिकली दिस इज द वर्क आई एम अज्यूमिंग ऑन द रेशियो स्केल। आई कुड हैव अज्यूम्ड एनी नंबर ऑफ माई चॉइस, बट हम जनरली या कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं और इसी नंबर को वर्क अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, सो दिस इज वर्क, दिस इज टाइम। सो एफिशिएंसी की भी बात आएगी। एफिशिएंसी कहां से आ गई सर? हमने तो चैप्टर टाइम एंड वर्क सुना था। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी इज जस्ट लाइक स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, सो एफिशिएंसी अब कितनी होगी? वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क इज 15, time is also 15, so 15/15 is 1. That means Satish can do one assignment in one day. This is what efficiency mean. When it comes to Kapil, so यहाँ पर कपिल के केस में अगर हम बात करें, so 15 is the work upon time. So time is 15/2. So 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा. So you can see that efficiency of Kapil is 2. और यही क्वेश्चन में दिया भी है, यही क्वेश्चन में दिया भी है। तो आप डायरेक्टली आप चाहते तो 1:2 ऐसे ही लिख सकते थे, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस तरह से लिखा है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि सतीश कैन डू 1 assignment in a day, कपिल कैन डू 2 assignment in a day, दैट मीन्स दे ऑल कैन डू 3 assignment in 1 day, 1+2। एक दिन में 3 असाइनमेंट हो रहे हैं। तो हमें कितना टाइम चाहिए 15 असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए? तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा, जो भी आपका 15 है, इस वर्क है, उसको डिवाइड कर दीजिए इस 3 से, तो 5 days यहाँ से भी आ जाएगा। So I hope this method must be clear to all of you. Sir, can we take LCM? That would be the total work. Yes, Nasha, I have done the same thing in the second method. The first method was the unitary method where I was considering 1/15, where 1 was the work I was considering, 15 was the number of days. So that was the unitary method, which we generally avoid, or we mostly avoid. We use the LCM method. And you are absolutely right when it comes to the assuming that LCM is going to be the work done by both Satish and Kapil. So that's was all about from my side for the today's session. I hope you must have learned a lot of new question in this session. You must have understood the basics of these question. So if you have not understood anything, do let me know. We will be coming up with that video as well, right? और आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन को. And again, for all the people, if you're new to this channel, do not forget to subscribe to our channel. Also, look at the description box. There you will be able to access the link of our study material, right? So that's enough for my side. I'm taking sign off. I'm signing off for the day. Take care, everyone. Thank you. Bye.